Lecture number 13, valence bond theory. Now I've written the theory in short, and along with the example let us see the theory, then the concepts will be more clear. The very first, central metal ion which is present in the complex, it provides the definite number of the vacant orbitals for the formation of the coordinate bonds with the ligands. मतलब क्या, as it is a transition element, okay, निकल का example ले लो यहाँ पे, it's a transition element, so it has got many orbitals which are vacant, and वो vacant orbitals में वो ligand electron donate करेगा. That is the point number 1. Okay, now let us proceed with the second. The number of vacant orbitals provided by the central ion is same as its coordination number. What does it mean? Now the things again would be clear if you take an example of it. See, if you take an example, अभी CO4 मतलब इसका the first example है NiCO4, coordination number कितना है 4. That means vacant orbitals कितने होने चाहिए, that is 4. उसका मतलब ये है. Next, these vacant orbitals undergo hybridization to form the same number of the hybrid orbitals. अभी ये जो 4 vacant orbitals है, they will mix and recast to form the hybrid orbitals. अभी that depends on what, अभी वो जो ज्योमेट्री है उसका, अभी सी sp3 और इट कैन बी dsp2 बिकॉज 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स है, समझा. सो ज्योमेट्री उसका क्या रहेगा, आइदर इट वुड बी टेट्राहेड्रल, अगर शायद वो sp2 रह सकता है, और it can be dsp2. These are the two options of having the vacant orbitals अगर 4 है तो, that is it. Okay, the next, each ligand has one orbital containing a lone pair of electrons. Every ligand, each ligand, अभी CO for example ligand है, तो एक CO के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, तो 4 CO के पास कितना रहेंगे, it will be 8 electrons, और 4 electron pairs will be donated by the ligand to the central metal atom. Okay, next, the vacant hybrid orbitals of the metal ion overlap with the filled orbitals of the ligand to form a coordinate covalent bond. अभी ये तो आपको मालूम है, मेटल एंड लिगैंड के बीच में there is a coordinate covalent bond. Fine. Next, the geometry depends upon the hybridization. Geometry depends upon the hybridization. मतलब अगर sp hybridization है तो उसका लीनियर है. मैंने ना चार्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया. Like for example, like what will I do? You know, I'll just मतलब ये just लिखने में I didn't waste my time writing all the hybridizations. So मैं आपको मैसेज सेंड करूंगी तो उसमें सब वो हाइब्रिडाइजेशंस का ये आ जाएगा. ओके, चार्ट आ जाएगा. अगर sp3 है तो यू नो इट इज टेट्राहेड्रल, अगर dsp3 है तो इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर d2sp2 है तो इट इज ऑक्टाहेड्रल. दैट इज द ज्योमेट्री दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन. ओके, स्ट्रॉन्गर द ओवरलैप, overlapping is more than the bond is stronger, obvious. अभी ये n-1 इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, nd है तो इट इज कॉल्ड एज आउटर कॉम्प्लेक्स. ये आपको बाद में समझेगा बिकॉज इट इज नॉट देयर इन दिस एग्जांपल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, हाउ डू वी डिसाइड इट. अगर इफ इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 जो एंड में लिखा है, does it contain a lone pair of electron? I am not speaking about the ground state electronic configuration. I am speaking about NiCO4. Does it have any lone pair? No. So it is dimagnetic because it doesn't have a lone pair of electron. Next, the strong field ligands अगर है तो pairing होगा, अगर weak ligands है तो pairing नहीं होगा. This point is very important. Okay, now let us see the example and let us see what I have written all over here. It is NiCO4, the very first. उसका oxidation state 0 है. तो what is the outer electronic configuration निकल का? It is 3d84s2. Okay, purposely मैंने वो 4s2 के electrons have written in the red color. You will come to know later on. अभी what will happen? CO जो है ना, it is a strong ligand. स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो क्या हुआ, पेयरिंग हुआ. तो जो 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स है उसने पेयर किया 3d के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड सो
पर्पसली मैंने वो रेड कलर से लिखा है बिकॉज इट हैज बीन पेयर्ड with the electrons of nickel in 3d8 orbital. Now, so 4s बाद में vacant हो गया and वो जो vacant है coordination number कितना है 4. तो 4 these are the vacant orbitals जिसमें 4 pairs of electrons will be donated by cobalt. So total it has got 8 electrons. So उसका hybridization क्या हुआ sp3. उसका geometry क्या हुआ tetrahedral. Does it have a lone pair? No. So what is it? Diamagnetic. This is how you decide. Okay. Now the second example NiCl4 2 minus. The very first nickel का oxidation state कितना है 2 plus. nickel का what is the electronic configuration 3d8 4s2. अभी Ni2 plus मतलब क्या हुआ 3d8 because 4s2 गया. ओके तो 3d8 का मैंने लिखा. ओके नाउ Cl स्ट्रॉन्ग है कि वीक है दैट यू शुड नो. दैट इज इन द प्रायोरिटी ऑर्डर. ओके तो ये वीक है. वीक है मतलब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा. ओके एंड देन अगेन 4 इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने चाहिए 4. सो अगेन इट इज sp3 hybridization. Geometry is tetrahedral and then the 8 electrons are again donated by the chloride ions. Now you can see here it contains an unpaired electron, so it is paramagnetic in nature. There comes the difference. It is paramagnetic because it contains a lone pair of electron. Okay, we'll have some more examples in the next lecture.